So today we are going to see some signals which may be used in the purpose of communication. Okay. So let me share the whiteboard. Whiteboard देख पा रहे हो? Whiteboard देख पा रहे हो? Okay. So वैसे आप लोग सिग्नल सिस्टम में टाइप्स ऑफ सिग्नल्स ये सब कुछ डिटेल्स में पढ़ोगे. I am not going through those things in an explanatory way, but whatever is needed, somewhat, I am going to deal that. Okay. So, do you know what is unit step function? Does anybody know unit step function? Okay. So unit step function is given by some ut, and it is defined for what? It is equal to 1 for the value for t greater than equal to 0 and is equal to 0 for t less than 0. Are you getting that? So how we can draw this picture, or how we can draw the graph of this signal? So if there is an axis, okay. So what is the unit step signal? Here we have the time axis, and here we have the signal xt. Okay. So what is the graph of unit step function? From the definition, you can see that this is the unit step function. Are you getting that? So what I have told, it is 0 here. So from this graph, what you can see? Okay, so just from this graph, what you can observe? Okay, so here you can see that at t is equal to 0, at t is equal to 0, what is the value of the, or what is the amplitude of the signal? 1. 1. And what is the amplitude at t is equal to t1? 1. And what is the amplitude for t is equal to minus t1? 0. 0. So from this graph, what you can conclude that ut, or unit step function, is defined for the time t greater than equal to 0, and the value of or the amplitude of the signal is 1 when it is greater than equal to 0, and is equal to 0 for t less than 0. Okay. So we can say that, okay, so what happens if this signal will get multiplied with any other signal? Okay. So if I am writing u t minus 1, then how it will be defined? U t minus 1. So its value will be 1 when for t greater than equal to
1 and is equal to 0 for t less than 1। इसका मतलब क्या है कि अभी हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, सो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज द टाइम एक्सिस, हियर इट इज एक्स टी। सो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मान लें t इज इक्वल टू 1 है, यहाँ t इज इक्वल टू 2 है, यहाँ 3 इज इक्वल टू 3 है, t इज इक्वल टू 3 है। तो ये जो फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 1, यहाँ पर u t माइनस 1 है, मीन्स एट t इज इक्वल टू 1 this function starts and it will be like this। okay, so if I am telling that u t minus 1 means the function will start with t is equal to 1 और इसके पहले जो values होगा all are 0। if I will tell you to draw the graph of u t plus 2, so where it is defined, how will be the graph of this function? So this function can be defined at, so this is t, so you can see from this expression this function that u t plus 2 means at t is equal to minus 2, so here it is minus 1, here it is minus 2, so its amplitude will be equal to 1 at t is equal to minus 2 and it will be like this। okay, so here the amplitude is 1, here also it is 1, so यहाँ ये 1 है and here it is also 1, so maximum amplitude of the unit step function is 1 and it is defined for a signal or for a value which is greater than the given value। उसके पहले के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होता है। अब हम एक दूसरे फंक्शन के बारे में बात करते हैं, लाइक डेल्टा फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, delta function। So this delta function is defined for what, delta t is equal to what, 1 for t is equal to 0 only, okay, and is equal to 0 otherwise, okay। So here how we can draw this signal, if this is t, then xt which is equal to delta t here, and here xt, all of these are xt is equal to ut, okay, here all of here the xt is equal to ut, okay। now यहाँ पर अब कहें तो जो फंक्शन है इस फंक्शन का वैल्यू सिर्फ डेल्टा t इज इक्वल टू 0 पर ही डिफाइंड है, ओके। अभी अगर हम बोलें दैट डेल्टा t माइनस 2, इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड ओनली एट t इज इक्वल टू 2, सो t इज इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू होगा 1 फॉर t इज इक्वल टू 2 ओनली एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, ओके। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इट विल बी जस्ट लाइक this one। So here it is any point 2, here 1, here 2, here 3, okay। So this is delta t minus 2, here time t is given, okay। So this type of basic functions are required when we will deal with our communication system, okay। Now जो कम्युनिकेशन में जो रॉ मटेरियल है विच इज कंस्ट्रेंट,
जो कि लिमिटेड अमाउंट में है, वो क्या है? कौन सी चीज है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है एंड यूजिंग विच वी आर डूइंग कम्युनिकेशन? क्या है वो लिमिटेशन? कुछ भी बताइए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। यस, एनीबॉडी? कुछ भी बोलो। सो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन करने के लिए? सर ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर। ओके, ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर में लिमिटेशन क्या है? ये तो एक डिवाइस है जो कि हम कितना भी बना सकते हैं, है ना? ये तो एक डिवाइस है जो कि हम कितना भी बना सकते हैं, इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। लिमिटेशन इज द फ्रीक्वेंसी बैंड। क्योंकि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में कर रहे हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन दैट इज टिपिकली ऑफ द रेंज ऑफ सम लोअर वैल्यू ऑफ रेडियो रेंज। ओके, जो हमारा, अगर हम ऑडियो सिग्नल की जो भी हमारे पास सिग्नल है वो किस फॉर्म में है? वो तो या तो स्पीच के फॉर्म में होगा, हाँ, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, या पिक्चर के फॉर्म में होगा। पिक्चर मीन्स सम लाइक, या वीडियो के फॉर्म में होगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है इंफॉर्मेशन? कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा इनिशियली? इनके अलावा और कुछ हो सकता है? आप अपने मोबाइल से क्या 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 किसी चीज को, किसी को सेंड करते हो? या तो स्पीच अपना सेंड करते हो, टेक्स्ट सेंड करते हो, पिक्चर सेंड करते हो, वीडियो सेंड करते हो। इसके अलावा आई थिंक दीज आर दी मोस्टली यूज्ड। ओके, सो ये जो भी हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसमिटेड यूजिंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो भी जो हम वेव ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रांसमिटेड यूजिंग सम फ्रीक्वेंसी बैंड। ओके, हर एक कंपनी का, या हर एक जो भी चैनल हम टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं, सो ऑल ऑफ दीज रिक्वायर्ड सम फ्रीक्वेंसी बैंड। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल के लिए या डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑलरेडी डिफाइंड है। वो मे बी लार्ज स्केल का हो, ओके, या एक्सट्रीमली लार्ज स्केल का हो, या अल्ट्रा लार्ज स्केल का